हाय गाइस, आज हम दिखाना चाहते हैं इफ़ यू आर वर्किंग एज ए agentic AI developer, then definitely you will be building graph. And to visualize that graph, you can use this extension, LangGraph extension. If you install this, so I have already installed. So after installing this, so whenever you will be building your graph, okay. So your end of the graph when will be compiling the graph. So that time this variable name should be graph, okay. Then after that select entire code एंड कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने के बाद यहाँ पे लैंग्राफ बोल के सर्च करो। मैं अगर सर्च करूँगा कि लैंग्राफ विजुअलाइजर, सो बेसिकली दिस इज माय विजुअलाइजर. इफ आई क्लिक दिस देन it will be showing like this kind of graph. Okay, how my agent graph will be working. Okay, so first as per this graph, first my agent will be going starting from this field, and then agent will be taking the input, and that input will be passed to the should continue node is returning the tool call, where as a result then this tool will be called, and then this tool output will be again going to the agent, and then agent will be the taking decision ki pass some value to this should continue node. Okay, then this should continue node basically will be taking the decision ki it will be going to this side or this side. Okay, so in this way you can visualize your graph. सो मैं यहाँ पे अगर कोई भी अगर चेंजेस करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे टूल कॉल के जगह पे कॉल मॉडल किया, तो अभी मैं इसको अगर सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं फिर से सिलेक्ट करके यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूँगा, तो उसके बाद मैं ये विजुअलाइजर ओपन करूँगा, तो दिखाई दे रहा है कि अभी मेरा ग्राफ का फ्लो ऐसा हुआ है. तो ऐसे में कुछ भी अगर मेरा अगर ग्राफ के अंदर मैं कुछ भी अगर चेंजेस करूँगा, तो चेंजेस को देखने के लिए मैं ये एक्सटेंशन से उसको मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ. Yeah, thank you guys.